In object-oriented world, building the objects required the right tool, and those tools are data types. Data types defines the kind of information that the variable can hold and ensures that variable stores the right data. Common data types include integer that stores whole number, double that stores decimal numbers, and string stores the text, while the boolean stores true or false values. So here's an example how we can use them in the code. Use these data types in front of variables and methods. अब methods के आगे mostly हम void use करते हैं. void is a specific data type that means nothing or empty. void हम mostly जब use करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारा method कोई action perform करे but कोई value return ना करे. So let me show you how you can use that in the method. So for that I have to create a class. I will call it rectangle. अब rectangle का मैं एक method बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं area calculate करूँगा. So now I will create a calculate method. अब उसके फ्रंट में मैं void यूज़ करूँगा. इसका मतलब क्या हो गया कि इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो भी मैं काम करवा रहा हूँ वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है लेकिन वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है. So these were the common data types that I will be using throughout this course.